campus politics that is exploded in the national capital. We're talking about the protests against the RSS event in Jamia Millia Islamia University. We're going to decode that. But also in Odisha, where a man had to dig up the grave just to be heard. These are two stories, but there's one prominent question. Is the system failing its own people? Before that, the top headlines we're tracking for you. Trouble mounts for Uttar Pradesh's Singham in West Bengal. Police complaint has now been filed against Ajay Pal Sharma over alleged house trespass and assault on women. UAE announces decision to withdraw from OPEC and OPEC Plus starting 1st of May amidst the West Asian war and the war-triggered blow to the oil market. What will this now mean for the oil exporting nations? Rising aviation turbine fuel prices push Indian airlines to the brink. Air India, Indigo, SpiceJet, they all seek ATF price relief, say industry, on the verge of stopping operations. India's air defense, meanwhile, set to get stronger. Russia ships India's fourth S-400 defense system to be deployed by the end of the next month. And US President Donald Trump's latest claim, Iran is in a state of collapse. And the US President now demanding the reopening of the Strait of Hormuz, quote unquote, as soon as possible. Well, our first segment on the broadcast, because Jamia erupted over an RSS-linked event and the protests and clashes around it. But this is more than just a campus protest. We're talking about ideology, a clash of identity, of ideology, and the question about who decides what belongs in a university. The spotlight is on Jamia Millia Islamia, where a sharp ideological divide has once again spilled over into the campus corridors. Tensions erupted inside Delhi's Jamia Millia Islamia campus as left-leaning student organizations staged a loud protest against an event organized to mark the 100th anniversary of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh. The program, which is part of the RSS's Yuva Kumbh centenary celebrations, was permitted by the university administration. However, students from groups like the All India Students' Association ISA and Students' Federation of India, the Jamia Millia Islamia unit, they strongly opposed it. They raised slogans such as "Reject Saffronization" and "RSS has no place in Jamia," quote unquote, demanding that the RSS functionaries have to leave the campus immediately. And outside the gates, the presence of the Delhi police and the Rapid Action Force told the story of a university that was certainly turning on edge. The protesting students allege a deep-seated bias within the university administration, claiming that while RSS was given free hand to hold grand programs, other student groups face constant security restrictions and denials when they try to organize discussions. For them, this is about the shrinking space for dissent and the unequal application of campus policies. However, there is another side to this story. Critics of the protests are labeling these demonstrations as an example of cancel culture. They argue that by trying to shut down an event rather than engaging in a debate, student groups are stifling the very viewpoint and diversity that a university is supposed to protect. Is this a legitimate protest against institutional bias, or is it a case of ideological gatekeeping where only certain thoughts are allowed to exist? Now, the incident is a flashpoint in a much larger debate about who gets a voice on Indian campuses today. The protesting students say they have every right to oppose what they see as an attempt at saffronization of campus spaces, and that they fear such events may create an unsafe environment for minority students, an affront for their dignity as well. This clash once again raises important questions about the real meaning of free speech, of diversity of thought,
and administrative neutrality in our universities. An esteemed set of panelists with us on the broadcast. And the big questions that we're trying to understand and ask: is protesting against an event acceptable? Or does trying to physically stop or disrupt it cross the line into cancel culture? Why do left-leaning student groups often claim that RSS-linked events threaten campus safety, while similar events by other ideologies do not face the same kind of opposition? Can Indian universities truly claim to be spaces for free thought if certain ideologies are declared unwelcome from the very beginning? With us on the broadcast, Ateeb Khan, who's an alumni of the Jamia Millia Islamia University. Many thanks for taking out the time. Professor Chambi Puranik, political analyst, with us on the broadcast. Long time no see, Professor. Many thanks for taking out the time. And Bilal Khan, who's a Muslim scholar and a political analyst, with us on the broadcast as well. Mr. Ateeb Khan, let's get the snowball rolling here and understand, as a Jamia alumnus yourself, how do you see this? What exactly played out in the national capital today? Was that protection of campus identity or restriction of diverse ideas? Why does the ISA say that Jamia Millia Islamia, RSS, has no place in this particular university? What's your viewpoint and assessment? I believe you'll have to unmute yourself, Mr. Khan. Hello, is I audible? Yeah, you are. Please go on. Hello. Yes, you are. Please go on. Is I audible? Yes, you are, sir. First of all, you mentioned ISA name so many times. This is not about ISA, or this is not about any political organization. The matter is that Jamia Millia Islamia is come from the movement started by Maulana Muhammad Ali Jawhar and Mahatma Gandhi. And this university was a place of communal harmony from the century. And from not now, I think in 2017, Indresh Kumar is the president of MRM, Muslim Rashtriya Manch. He came for a program in Jamia Millia Islamia. From that time, these activities were started. And the main thing is that if any political organization or any organization who was promoting heart rate in the community and they want to come to Jamia or any university, is they will get the permission? I think no. Because right now, the VC of Jamia Millia Islamia is a member of ABVP, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, and currently is a VC of Jamia Millia Islamia. That's why they are conducting these kind of programs. And second thing is that all the students, those who are protesting against this event organized by RSS, Rashtriya Sevak Sangh, in the name of Yuva Kumbh. They are celebrating 100 years of RSS, and why they want to go to the minority institution or the university campuses to spread the hatred. The main thing is that they want to divide the community, and they want to create the... How exactly are they trying to do that? I'm just trying to be the devil's advocate here, Mr. Khan. I'm trying to understand, how are they exactly trying to do that, spread hatred? According to the event manifesto, this was about how the youth of the nation are going to take part in nation building and the kind of role that they will have to now play. So how are they exactly spreading hatred? And when it comes to ISA, look at some of those pictures. The SFI, Jamia Millia University unit, they carried out this protest. ISA was carrying out that protest, which is why I'm taking those names. I'm not affiliated to any of those. My job is to ask the right questions. That's why I'm doing it. Those students, those who are protesting today, that auditorium is FTT auditorium inside the faculty of engineering, and those we have the right to protest, peacefully protest. If you are coming to my home and I'm not ready to invite you, and you are still coming into my home, and then I protest against you, you are starting beating me. Then when the student protesting for the event and they went inside the auditorium, they were beaten by the guards and the goons. So in the university premises, if students are protesting and they are targeted by the goons, or local goons, outside goons, and the administration, so what is this? So we are, all the Jamia alumni and the students are against these kinds of events. These events are happening to spread the hatred in the university premises. That's our stand.
Okay, okay. I'm going to come back to you because I really need to understand how is hatred being spread. Of course, it's no news. There is a clear-cut ideological difference. But how is hatred, quote-unquote, being spread? I think we do need to throw some light on that. Professor Puranik, let me come to you. Is this a classic case of ideological clash, or are we seeing deeper fault lines within campus politics? We've got many of those examples that, graphics are showing on the screens. Given distinct history and demography of Jamia Millia Islamia and now the new, affiliation, like Mr. Khan put it, of the Vice Chancellor, was this event bound to trigger resistance, and was it ill thought? What's your assessment? Kabir, all of us, being a professor last 45 years, I believe in secularism, which you and your channel also believes. And universities are open for all kinds of debates, whether it is leftist, centrist, or rightist. I think universities should not go, or students should not be made to push people outside and scuttle discussion and debate. University is meant for open debate. So debate versus debate, that would be a better idea. One. Number two, university administration has permitted for the event or organization, whatever it is. And that, when the university has permitted, it should be organized. And also those people who want to protest, they can protest outside peacefully. Yeah. But it should not, the university should not be a place for propaganda or even for a kind of violent protest on the basis of... The Jamia alumnus, you just heard them, Professor, they're saying that this is because they wanted to spread hatred. What does one make of that? All these visuals, the protests that we've been seeing, of course, ISA, SFI, protesting against it. They say that, safety and dignity of the minority students are under threat. They demand immediate withdrawal of this. They want an explanation from the administration on why the event was called on in the first place. And this is a direct provocation and affront to the minority students' dignity. Do they have any sort of credibility in those arguments? Help us understand. You're a professor yourself. I think, I have handled such situations as Dean of Students' Welfare. That's leave that. But my main point is that the university has permitted, and students have right to protest also. No problem. But their protest should be within the limits. They cannot say that exclusively Jamia Millia is barred from such ideas. For example, Kabir, I have taught fascism and Nazism, but I have never encouraged the kind of dictatorship or the genocide that happened also. Even atheism, I have taught atheism. And also I have taught about the Prince, the book that is written by, Machiavelli. That doesn't mean the ends justify the means. So that kind of ideology, I think the students are not, I don't say they are misled, but they are overreacting. I think what they could have done is, before the event was organized, they could have asked the Vice Chancellor, why did you permit, first of all? Second thing is there any precedence? But as I know, I have visited Jamia Millia and many other universities in the country, including Aligarh. I don't think the universities per se, they are opposed to such organizations. But the idea of the fear, the apprehension of saffronization, something which is in the narrative these days, I think the students are bound to react so quickly. And also, they go to the extent of saying that the university is trying to bring in RSS or whatever it is and all. But if it is so, you must give evidence. And hatred, when the hatred is promoted by such debates, you must have counter debates. Well, Professor, you're absolutely right. I mean, a university is supposed to be a place where, debates will engage. I mean, debate and dialogue has to engage all of these issues. And the students and the students' body, they're saying that, hey, we put it across as a complaint earlier on, and it wasn't heard. I mean, they fell on deaf ears. Nothing was done for it. And that's why this protest that we saw today. But let me bring in our third panelist as well, Bilal Khan, advocate and political analyst, a Muslim scholar himself. आपसे भी बात करते हैं। खान साहब, जामिया जैसे संस्थान, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर इतना ज्यादा विरोध क्यों? चीजें बदल भी सकती हैं, जाहिर सी बात है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, सामने सामने जाहिर है, लेकिन क्या ये पहचान और इतिहास से जुड़ा मुद्दा है या फिर ये चिंता जायज है? क्योंकि लोग कह रहे हैं अल्पसंख्यक छात्रों में डर और असहजता है। आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है इस पे? देखिए, होल वर्ल्ड न्यू अबाउट आरएसएस एजेंडा एंड हिज आइडियोलॉजी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट मैं ये अभी स्टार्टिंग करना चाहूंगा, जामिया को बदनाम करने की साजिश जो है वो आज से नहीं है। आपको पता होगा आज से 6 महीने पहले भी यही हुआ था।
वहां कुछ लोग जिस तरीके से गुंडागर्दी आरएसएस के लोग आउटसाइडर आकर वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्लोगन्स लगा रहे थे, चाहे वो जय श्री राम के नारे हों, चाहे और भी बहुत सारे नारे जो बिल्कुल खिलाफ है। अब आप स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट आप लोग जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, जी। बट वहां पे जितने भी लोग आते हैं वो आइडियोलॉजी को अपना, जिस तरीके से अभी वीसी के बारे में बताया, जो वीसी हैं बहुत आरएसएस के प्रोग्राम्स में भी जाते हैं, वो उनके आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, उनका एजेंडा चलाते हैं पूरे जामिया में। ये एलुमनाई को भी पता है, वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को भी पता है। और वहां पे जो प्रोग्राम रखने का क्या मायने हैं, आप ये बताइए। वहां तो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के नाम पे राजनीति करके आप अलीगढ़ एएमयू को बदनाम कर रहे हैं, जामिया को बदनाम करते हैं। हमने हमेशा देखा जब जब इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं वहां पर ऐसे ही प्रोटेस्ट होता है, ऐसे ही बाहर से स्टूडेंट बुलाए जाते हैं और वहां प्रोटेस्ट कराया जाता है। और कुछ लोग जो वाकई में खान साहब अभी कुछ ही दिन पहले आपकी बात सुन रहा हूं मैं, अभी कुछ ही दिन पहले जेएनयू में भी इसका कार्यक्रम किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई और यूनिवर्सिटीज में ये युवा कुंभ जो है, जिस हिसाब से ये इवेंट चल रहा है, इसके कई कार्यक्रम बाकी उसमें भी हुए। अतीक साहब आपके पास आ रहा हूं मैं एक सेकंड में बस। ये राम माधव का कहना है कि संघ की जो स्ट्रगल है वो प्योरली आइडियोलॉजिकल है, किसी भी एक रिलीजन या एक इंसान के खिलाफ इसमें दुश्मनी का कोई भी प्रभाव नहीं है। सोशल हार्मनी इसका एक लौता पिलर है। और उनका यह भी मानना है कि आने 100 साल की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल की इस सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में बहुत जरूरी है कि युवा पार्ट लें। इसमें गलत बात क्या है, बस वही समझना है ताकि दर्शकों को भी समझ में आए। आरएसएस की आपको नहीं पता, आरएसएस के हेडक्वार्टर नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर देश का जो नेशनल जो फ्लैग है वो तक आज तक नहीं लगाया गया था। कितने साल आपको पता है? 43 ईयर्स। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ये जो देशभक्ति जब से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो आरएसएस सबसे बड़ा देशभक्त दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब आरएसएस के प्रोग्राम में जाते हैं वहां जोड़ने की बात नहीं होती है, चाहे वो मोहन भागवत जी के बयान उठा लीजिए, चाहे वो आरएसएस से बड़े लीडर्स हों जो कनेक्टेड है आरएसएस से, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, उनके एक एक बयान आप जो तोड़ने वाले बयान है, जो 80-20 की बात करते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो देश में नफरत की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी के तो खिलाफ है हम लोग। जोड़ने की कोई बात करिए आरएसएस ने आज तक कि हम सबको एक साथ लेके चलेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें तो कोई अभी तक नजर नहीं आती। वही तो प्रोटेस्ट है जो जहरीले बयान देकर स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मुसलमान यूनिवर्सिटी बता रहे हैं इस तरीके से कि जामिया में हिंदू लड़के नहीं पढ़ते क्या? एएमयू और जामिया को टारगेट क्यों किया जाता है? आपको नहीं मालूम है किस तरीके से इतिहास है इन लोगों का? कभी जोड़ने की बात नहीं करी और अंग्रेजों से लगातार इन्होंने माफिया मांगी। इनके इतिहास पूरे देश दुनिया को पता है। हमारी वही तो इनके खिलाफ आइडियोलॉजी जो इनकी है उसके अगेंस्ट है। हम ऐसे खिलाफ नहीं किसी के भी, चाहे वो तोड़ने वाली बात हो। हमने देखा होगा देश के अंदर जहां भी कुछ विवाद हो रहा है, आरएसएस सबसे पहले पहुंचती है वहां, सबसे पहले अपनी बात बोलकर और वहां नफरत के बयान दिलाए जाते हैं। ऑलराइट खान साहब, विल कम बैक टू यू। मेरा तो ये भी मानना है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक मौका आरएसएस को भी दे दिया जाए, वक्त बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, चीजें भी बदल सकती हैं। एक मौका आरएसएस को भी दे दिया जाए। जामिया मिलिया दुनिया में इतनी मशहूर यूनिवर्सिटी है, एक मौका आरएसएस को वहां पर भी दे दिया जाता है। और सिर्फ जामिया मिलिया में थोड़े हो रहा है इवेंट, ये तो अक्रॉस द बोर्ड सो मेनी अदर यूनिवर्सिटीज आर आल्सो कैरिंग आउट दिस इवेंट। अतीक साहब, आई एम गोना कम टू यू इन जस्ट अ क्विक बिट। अतीक साहब, बेग योर पार्डन, आपके पास बस आ रहा हूं मैं। Professor, what do you make of this? The idea, it seems, is that this is not RSS is anti-secular and they shouldn't come here. But what's your assessment? You've heard both of these, panelists. I think both of them. I mean, they have their own perception and conviction. They speak like that. But the university is a place for open discussion, liberal ideas, and debates, dissent, and the kind of different perceptions that are there. They have to be debated. So the space should not be curbed. That's the main point. You allow that. If there is a definite evidence of hatred and Vice Chancellor is having an hidden agenda on all that can be exposed also. It's a public, university. It is not a private university where things are covered, shielded and all that. So in my opinion, I am not against any kind of protest. Protest is a part of the democratic process of dialogue and debates. But you must have space for different ideas also. And enlighten the students, broaden their outlook, and saffronization and such other things, if they are there, you must protest in a peaceful way. All right, Professor, let me take the same to Mr. Atib Khan. Atib Khan, the professor here is saying that every ideology should be given a chance and you can register your protest. But do you believe that this protest that we saw today crossed from dissent
into disruption. Could this have been handled a little differently via dialogue instead of confrontation? Basically, the students protest, and they are the peaceful protest. They go there and they said, we don't want you people inside our campus. You spread hatred. अब मैं थोड़ा सा जाता हूँ. अभी I was the student of Jamia Millia Islamia, and on that time, university didn't allow us or anybody, any student organization within the campus or any political party to conduct a program in the university, because university का कहना है कि university सिर्फ जो पॉलिटिकल प्रेमिसेस के लिए नहीं है. आरएसएस एक, मैं तो ये नहीं कहता, आरएसएस कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसकी आज भारतीय जनता पार्टी भी एक आरएसएस का अंग है. उनकी पूरी हिंदुस्तान में सरकार है और कई राज्यों में सरकार है. और जो हमारे वीसी हैं जामिया के, बेसिकली मजहर आसिफ साहब, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड ही वाज द मेंबर ऑफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद. तो आप सपोर्ट कर सकते हैं कि कैसे उनको यहाँ पे परमिशन मिली. और परमिशन मिलने की तो बात ही नहीं है. कोई भी यूनिवर्सिटी है, दे ऑल द यूनिवर्सिटी आर अंडर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को कौन मना कर सकता है परमिशन के लिए. सेम टाइम पे ये मैटर आज हाईलाइट हुआ है बिकॉज ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया. रामजस कॉलेज में अभी कुछ दिन पहले some students, those who are protesting against this event, Yuva Kumbh, they were beaten by the ABVP people and the local RSS people. So why these kind of incident happening in Delhi or other university premises? Why these people are coming to university and beating the students, those who are speaking against them? As sir is mentioning, they want to change their image, they want to make their image peaceful and all. But these kind of gestures from the side of RSS, I don't think so. They want to make the university campus and the campus harmony in the university. They want to create disruptive things. They want to make the campus वो कैंपस में बेसिकली मेरे हिसाब से वो ये करना चाहते हैं. वो एक डिबेट चलाना, भी इलेक्शन भी चल रहे हैं जैसे, तो एक नैरेटिव जाएगा, भाई जामिया में हम जा रहे हैं लोग और वहां से वायलेंस हुआ है. कुछ भी अगर आज ऐसा होता तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता, जिसको एक कम्युनल एजेंडे की तरह इस्तेमाल करके कल वहां पे वोटिंग है बंगाल के अंदर, उसको वोट लिया जाता. तो बेसिकली ये चीजें हैं, हम सब जानते हैं आरएसएस का माइंडसेट. और मैं लास्ट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, आप मुझे 1 मिनट और दीजिए. अभी जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू का मेजर फंड जो है वो गवर्नमेंट ने कट किया है. जामिया मिलिया इस्लामिया को इसी वजह से 50% कोर्सेज को प्राइवेटाइज करना पड़ा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है यूनिवर्सिटी चलाने के लिए. गवर्नमेंट उनको पैसा नहीं दे रही है. या आरएसएस, जिसकी बीजेपी की गवर्नमेंट पूरे इंडिया में है, क्या कभी आरएसएस के या एबीवीपी के किसी लीडर ने गवर्नमेंट से बोला कि आप जामिया के फंड को कट मत करिए? आप जामिया आ तो रहे हैं प्रोग्राम करने के लिए, आप जामिया के लिए आवाज उठाते हैं? नहीं उठाते. आपको कोई मैटर नहीं है. यू वांट टू क्रिएट डिस्ट्रक्शन. आपको यहाँ का माहौल खराब करना है. आप आ रहे हैं, आप चाहते हैं कोई ना कोई क्लैश हो. अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में कुछ भी होता है, सभी यूनिवर्सिटीज में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जामिया में कुछ भी होता है तो जामिया को छावनी बना दिया जाता है. क्या वहाँ पे स्टूडेंट नहीं पढ़ते? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? हर मजहब का बच्चा वहां पे पढ़ता है. मैं आपको एक बात बताऊं अतीब साहब, क्यों करते हैं आप आपने कुछ पर्टिनेंट पॉइंट्स रखे हैं, कुछ पर्टिनेंट पॉइंट्स आपने बताए. आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज बहुत सारे लेफ्ट लीनिंग इवेंट्स भी होते हैं जिसमें राइट विंग आके दे कैरी आउट दैट डिसेंट. इजंट दिस द सेम थिंग दैट्स हैपनिंग? बस चीजें विपरीत हो चुकी हैं. आई वांट टू क्लियर यू वन थिंग. There are so many student organizations in Jamia Millia Islamia, ISA, MSF, Muslim Student Federation, NSUI, and SFI. There are so many student organizations. Even the ABVP is there. सब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोग्राम करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती कैंपस के अंदर. लेकिन ये एबीवीपी का प्रोग्राम नहीं है. इस प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कुंभ, ठीक है, युवा कुंभ. तो प्रॉब्लम इससे है कि आरएसएस अपना प्रोग्राम क्यों कर रही है. हमें प्रॉब्लम इससे नहीं है. एबीवीपी ने भी जामिया कैंपस में बहुत सारे प्रोग्राम करे, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया? कभी आपको कुछ हुआ? अभी जामिया में सब सद्भाव के साथ होली मनाई गई, सबने होली मनाई. अगर वहां पे कोई डिस्ट्रप्शन होता तो मैं भी आपकी डिबेट पे बैठा होता. तो ऐसा कुछ नहीं है, कैंपस हार्मनी है. आरएसएस जो हमेशा से एक कम्युनिटी के खिलाफ बात करती आई है, उसके खिलाफ स्टूडेंट का गुस्सा है. वो नहीं चाहते कि हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारा माहौल खराब हो, हमें पढ़ाई से प्रॉब्लम हो, हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो. अतीब जी, we hear you. You've registered your point. Let me go across to Bilal Khan. Bilal Khan, आप बड़ी देर से एक पॉइंट करना चाह रहे हैं. प्रोफेसर, I'm going to come back to you. We're going to give you the final say. बिलाल साहब, आप अपना पॉइंट रखिए, आप अपना पॉइंट रखिए जरूर, लेकिन लोगों को ये भी बताइए. I do want to understand from you also that क्या
क्या एक तरीके से हम ये भी तय कर रहे हैं, और मैं आपसे सवाल कर रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है, यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बच्चे आए, आपस में विवाद हो, लेकिन सब कुछ घर लेके जाएं, कुछ सीख के जाएं। क्या एक ऐसी सिचुएशन यहां पनप रही है जहां पर ये तय करने की कोशिश हो रही है कि भाई कैंपस पे किस तरह की सोच चलेगी? बिल्कुल, देखिए ये सोच वही है जब जामिया के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी, किसी ने, आरएसएस वाले ने कोई आज तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया, और उनको ये कहा गया स्टूडेंट नहीं है, इसको उनको तो मारो, आतंकवादी तक कहा गया। मैं बताऊं कुछ स्टूडेंट्स के बारे में, जब जामिया में प्रोटेस्ट हो रहा था, भारत का संविधान है, इजाजत देता प्रोटेस्ट करने को, कोई भी स्टूडेंट, आप भी, मैं भी प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब वो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद किसने, आरएसएस के लीडर ने, जब लाठी चार्ज हुई थी जामिया की लाइब्रेरी में, पुलिस वाले घुसे थे, जब बीजेपी की सरकार थी इस केंद्र के अंदर, जब सारी चीज, उसमें किसी ने भी एक फेवरेबल स्टेटमेंट दिया हो तो हम कैसे हाथ बढ़ाएं, ये बताइए। जब यहाँ दिवाली मनती है, जब दिवाली भी साथ मनाते हैं एबीपी वाले, जैसा अतीब ने अभी बताया, एबीपी की होली भी मनती है, ईद भी मनती है, सारे त्योहार मनते हैं जामिया के अंदर, आज तक कोई भी किसी ने कोई भी वहां पे ना कोई प्रोटेस्ट किया उसके अगेंस्ट में, ना कभी कुछ ऐसा हुआ। जब आरएसएस का सिंगल एजेंडा चलता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है वीसी के द्वारा, तो उस पर विरोध करने का हक है ना। वही स्टूडेंट ने आज प्रोटेस्ट किया तो उनको भी इस तरीके से आज दिखाना चाहते हैं, कल इलेक्शन है वहां पे, कि भाई यहाँ पर आरएसएस का कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता, कोई विरोध हो सकता। तो जब जब हमारी बात स्टूडेंट्स की आती है, जब वही तो सवाल खड़ा हो रहा है, सवाल यही तो खड़ा हो रहा है कि क्या विरोध होते होते, विरोध करते करते क्या वो लाइन क्रॉस कर दी गई? आयसा, एसएफआई, इन लोगों ने विरोध करने में डिसरप्शन तरीके, मतलब पुलिस को आना पड़ गया, रैपिड एक्शन फोर्स को आना पड़ गया, प्रोटेस्ट रजिस्टर, प्रोफेसर पुराणिक वही तो बात कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट सब रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन एक कायदा होता है, एक तमीज होती है प्रोटेस्ट रजिस्टर करने की। क्या उस मर्यादा को क्रॉस कर लिया गया? वही तो सवाल कर रहे हैं हम बिलाल साहब। कोई मर्यादा क्रॉस नहीं हुई, लेकिन जामिया को एक ऐसा अड्डा बना दिया गया, वहां कोई भी जरा सा भी 4 स्टूडेंट भी इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पुलिस पहुंच जाती है। ये क्या तरीका है? अगर 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहां सबसे पहले एकदम ऐसा हाईलाइट हो जाता है जब पता नहीं क्या होने वाला है। ये न्यूज बनाई जाती है कि यहाँ पर आप बाहर भी कहीं भी प्रोटेस्ट करिए, कुछ भी नहीं होता। मैं मानता हूँ इस बात को, प्रोटेस्ट इस बात में हक तरीके से होता है, लेकिन यहाँ जामिया में अगर 5 स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें, 10 स्टूडेंट, तो आप ये देख लीजिए कितनी पुलिस खड़ी होगी जामिया पर। तो हमारा सीधा सवाल ये है कि जामिया को इस तरीके का, ऐसा कोई स्टूडेंट वहां पे, इस तरीके के लोग रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो वहां पर इस तरीके की वारदात करेंगे, जैसा आरएसएस की आइडियोलॉजी है। कोई भी लगातार कोई भी बात होती है, उठा के मुसलमानों का नाम, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, तो हम वही आइडियोलॉजी के तो खिलाफ है ना, वही तो प्रोटेस्ट है कि आरएसएस क्यों इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है। चाहे वो एएमयू के अंदर हमने देखा हो, वहां पे लगातार ये स्लोगन की बातें वहां पे पीछे से आके। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने अपने फर्स्ट सबमिशन में भी यही बात करी, ये जो युवा कुंभ जो इनका इवेंट है बिलाल साहब, ये जो युवा कुंभ इनका इवेंट चल रहा है, इसमें किसी, जो बाकी के यूनिवर्सिटीज में इस तरीके के इवेंट्स हुए, क्या उसमें कोई भी हिंदू मुस्लिम या इस तरीके मंदिर मस्जिद इस तरीके की कोई भी बातचीत हुई? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप जरूर फॉलो कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वहां उनको नहीं करनी, उनको ये पता है मेरा राजनीतिक फायदा कहां से होगा, जामिया और एएमयू से होगा, वहीं उनको टारगेट करना है, और अपना जेएनयू से होगा। 3 यूनिवर्सिटी टारगेट पे ली हुई है उन लोगों ने, जेएनयू, एएमयू और जामिया। अच्छा, जेएनयू में इवेंट हुआ, राम माधव साहब गए, बढ़िया चाय पी उन्होंने सबके साथ, गंगा ढाबा पे बैठे, गंगा ढाबा पे बैठ के उन्होंने सबसे बातचीत करी, काफी देर तक वो चाय पे चर्चा का सेशन चला, लेकिन वहां पर इस प्रकार की बातें नहीं। काफी मुस्लिम स्टूडेंट्स जेएनयू में भी पढ़ते हैं, काफी लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट्स जेएनयू में भी पढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ वहां का भी मुद्दा बनाया गया जनाब, आपने शायद न्यूज मैंने पूरी न्यूज भेजी, जहां जेएनयू के अंदर हुआ था, वहां पे भी स्टूडेंट आए थे अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन वहां पे भी ये एजेंडा चलाया गया था हर न्यूज चैनल पे ही कि वहां अटैक करने की कोशिश की आरएसएस के प्रोग्राम पे। ये जैसे आप जामिया में हो रहा, सेम ये कंडीशन थी। आप सारा पूरा एक बार रिपोर्ट देख लीजिए, जामिया में कुछ ऐसा क्या हुआ है मुझे बताइए, कोई इंजरी, कोई मारपिटाई, कोई कुछ, प्रोटेस्ट किया है सिंपल आके उन लोगों ने। तो उसमें क्या है, प्रोटेस्ट तो कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट का राइट है, भारत का संविधान उनको इजाजत देता है। ठीक है, आप कह रहे हैं जेएनयू में भी इसी तरह की सिचुएशन पनप रही थी, इसी तरह की सिचुएशन होने वाली थी, हालांकि विजुअल्स और इवेंट्स कुछ अलग बता रहे हैं। अतीब जी, वेरी क्विकली विल कम टू यू एंड द फाइनल वर्ड टू मिस्टर प्रोफेसर पुराणिक। इट इज नॉट अबाउट मुस्लिम, इट इज अबाउट आरएसएस। जेएनयू में पिछले 6 महीने से वहां के स्टूडेंट्स यूनियन वीसी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और इसलिए हो रही है कि उनके कोर्सेज को एक आरएसएस की सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कोर्स को प्राइवेटाइज कर रही है, और उन्हें कह रही है आपको यहाँ पे जबरन क्लास लेनी पड़ेगी। तो ये तो सारी चीजें आपके सामने आएंगी जब आप उनको बुला के आप पूछेंगे। मैं तो उनके बिहाफ पे बता रहा हूँ। दूसरी चीजें, आप कह रहे थे जामिया में पुलिस आ जाती है,
जामिया में अगर दो बच्चे भी गेट के ऊपर आपस में लड़ाई हो जाती है तो यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स आके खड़ी हो जाती है। 2019 से पहले हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। अब ये कंडीशन है जामिया में 2019 के बाद। जामिया में कुछ भी मैटर, या बच्चे कहते हैं पीसफुली कैंडल लाइट मार्च भी निकालेंगे, तो गवर्नमेंट इतना अलर्ट पे रहती है जामिया को लेके कि फौरन रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, लोकल LIU, सब लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं जाके, जैसे यहाँ पे कोई यहाँ पे दंगे करवाने वाला हो। ये तो बात हमें समझनी पड़ेगी कि हमें अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से IAS ऑफिसर निकालना चाहते हैं। जामिया हर साल 20 IAS ऑफिसर निकालता है, 30 IAS ऑफिसर। बेशक बेशक, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मैं एक बात मैं जाहिर कर दूं और साफ कर दूं, देयर इज इन नो वे दैट पीपल कैन slump on any disgrace to the Jamia Millia University. It is world renowned. It is going to stay that way. Nobody can touch that. It stays there. Nobody can touch that. And Professor Puranik, look at some of these points that both our other panelists have put across. They are making some credible, pertinent points, but something seems still to be a little bit amiss. So a final word from you, and just my quick rejoinder to Mr. Ateeb Khan. मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ इस केस की बात कर रहा था. In this case we saw, and we are showing on our screen, so many people. Of course it could be a situation कि दो लोग मिल जाते हैं, पुलिस आ जाती है, पुलिस हमेशा अलर्ट पे रहती है, ऐसा हो सकता है. I am only talking about today's case and today's case alone. And I was talking about that the rapid action force did come across. Final 30-40 seconds, Professor Puranik, and then I'll wrap this up. Well, my only appeal is that there should be kind of communal harmony and a peaceful atmosphere at the campus. I think the Vice Chancellor could have planned it better. He could have involved fair enough. discussion with student leaders and also faculty members and learned speakers who are there, a couple of them. In order to promote this kind of bonhomie, I think, when you have a right to protest, you have also to respect the right to debate also. From that angle, any idea that comes to the university or organization, I think the students should be enlightened and educated. But in this polarized atmosphere, Kabir, it's very unfortunate that such sensitive matters go out of control and we make a debate about it, and then we try to analyze in a different perception. But my point of view is they are our students, and students are still, have the kind of right to protest, and that protest should be respected. But they also should respect the opinions and the debates. They should welcome and see that everything. You rightly pointed out, Professor. Respect is a two-way street. It has to go that way. And, maybe something's amiss here, but universities should now balance free speech with sensitivity. And we know that, when it comes to Jamia Millia Islamia, it has been a key site for student activism, and it is a charged atmosphere and environment. And maybe things could have been better managed over here, with all said and done, and all due respect to all sides over here. From Ramjas to Jamia, from JNU to IIT, the faces change, the ideologies switch, but the questions, they remain actually the same. Are our campus spaces built for dialogues, or are they now battlegrounds for dominance? On that note, many thanks, Professor Puranik. Many thanks, Mr. Ateeb Khan and Bilal Khan, for joining us on this particular segment. We're going to slip into a quick commercial breather here. On the other side, that very heart-wrenching, gut-wrenching story from Odisha. Don't go anywhere. With AI-powered systems like the DSU AI Factory, threats can be detected and countered